Hello everyone. Today we are going to discuss public prosecutors under BNSS. अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो डेफिनेशन है वो हमको सेक्शन 2B में देखने मिलता है. It says public prosecutor means any person appointed under section 18 and includes any person acting under the directions of a public prosecutor. तो आपको 2B से बस इतना ही पता चलता है कि जिसको भी सेक्शन 18 के अंडर अपॉइंट किया जाए he will be considered as a public prosecutor and any person who is acting under the directions of such public prosecutor जो उसकी बात सुन के कोई काम कर रहा है वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डेफिनेशन के अंडर आता है. बट हमें ये नहीं पता चलता कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है और क्या करता है. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज बेसिकली the agent of the state who represents the interest of the common people in a criminal trial. Now we know that there are two parties. There's the defense and there's the prosecution. So defense, though, of course, is by the accused. The prosecution is led by the public prosecutor, and the public prosecutor basically is considered as a minister of justice whose duty it is to assist the judge in administration of the justice. अब वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, आप ये याद रखें. हम सेक्शन 18 को अगर देखें तो सेक्शन 18 हमें बताता है अबाउट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अंडर BNSS. वो कैसे अपॉइंट होते हैं, वो प्रोसीजर जो है वो हमें सेक्शन 18 में देखने मिलता है. फॉर एवरी हाई कोर्ट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जब भी अपॉइंट करती है वो अपॉइंटमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट करती है और उसे जब भी नेसेसरी लगता है कि सिर्फ एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर से तो ऑफकोर्स काम नहीं बनना है तो वो क्या करते हैं, वो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी अपॉइंट करते हैं. अब ये प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं उनका काम क्या है, वो कोई भी प्रोसिक्यूशन, अपील या अदर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में कंडक्ट करते हैं. नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली जो है उसमें जो अपॉइंटमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा और ना कि द स्टेट. The central government may also appoint one or more public prosecutors for conducting a case in a district or a local area. और वही सिमिलर पावर दी गई है स्टेट को भी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सबसेक्शन 2 के अंडर वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हायर कर सकती हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोसिक्यूशन को लीड करेंगी. सबसेक्शन 3 के अंडर में फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट विल इटसेल्फ अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर and where necessary they may also appoint additional public prosecutors for the district. जहाँ पे ये अपॉइंट हुए हैं आइदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर वन डिस्ट्रिक्ट, दे ऑल्सो मे बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर अनदर डिस्ट्रिक्ट. तो कोई बार नहीं है कि अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर दिया गया है तो अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं हो सकते हैं. फिर हमें बताया जाता है कि जो डीएम है इन कंसल्टेशन विद द सेशंस जज एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं. उस लिस्ट में उन लोगों का नाम होता है जिन्हें फिट कंसिडर किया जाता है टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट. एंड कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है अनलेस एंड अनटिल आपका नाम उस लिस्ट में मेंशन्ड है. जबकि अगर ऐसा सिचुएशन है कि the state has established a regular cadre, the state has conducted examinations for instance and has established a cadre of public prosecutors, then the state must appoint a public prosecutor or additional public prosecutor only from the people who constitute the cadre, right? जब state government को लगता है कि no suitable person is available in such cadre, then they can go ahead and appoint from the list of names prepared by the DM under subsection 4. जब भी किसी को एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा दे शुड हैव एन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 years. सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई स्पेशल केस या क्लास ऑफ केसेस को ट्राई करने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपॉइंट कर सकती है एंड दे शुड ऑल्सो हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अप टू 10 years. अब
जब हम ये 7 years 10 years कैलकुलेट करते हैं, वो पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है वो हमको सबसेक्शन 9 में देखने मिलता है. इट सेज दैट द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज बीन इन प्रैक्टिस एज अ प्लीडर और हैज रेंडर्ड सर्विस एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एज एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एनी अदर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, वो पीरियड जो है वो काउंट होता है एज प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट. जब भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो रहा है अंडर सबसेक्शन 8, वी ऑल्सो सी दैट द कोर्ट कैन परमिट द विक्टिम टू एंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस. तो एक प्राइवेट अटर्नी को भी अपॉइंट करने का चॉइस दिया जाता है एक विक्टिम को, सो एज टू इंश्योर कि उनका जो केस है वो जेपरडाइज नहीं हो रहा है. अगर उनको ऐसा लगता है तो दे कैन फाइल एन एप्लीकेशन एंड द कोर्ट कैन अलाउ दैट. Then we have section 19 which talks about assistant public prosecutor. असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है हर डिस्ट्रिक्ट में, एंड द जॉब इज टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स. सिमिलरली सबसेक्शन 2 के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है may appoint one or more assistant public prosecutors for conducting the case on behalf of the central government in the courts of magistrates. नाउ जब उन डीएम को लगता है कि कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है और ऐसा एक सिचुएशन आता है, तो जो डीएम है वो किसी और इंसान को एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं आफ्टर गिविंग द स्टेट गवर्नमेंट अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 14 days. बट जब भी किसी को एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है या इज बिलो द रैंक ऑफ एन इंस्पेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर. देन वी हैव section 20 which talks about the Directorate of Prosecution. अब Directorate of Prosecution का जो section है, it has been beautifully organized and we can study it in parts. But जो state government है, it establishes Directorate of Prosecution at 2 levels. Firstly, a Directorate of Prosecution in the state, that is at the state level, consisting of director and deputy directors of prosecution. तो पहला क्या लेवल है, पहला है स्टेट लेवल, उस पे डायरेक्टर्स और डेप्यूटी डायरेक्टर्स होंगे. एंड देन वी हैव अ डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें डेप्यूटी डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे. उनकी एलिजिबिलिटी क्या है? For anyone to be appointed as a director of prosecution or deputy director of prosecution, they should have been an advocate in practice for at least 15 years. तो उनका at least 15 साल का experience होना चाहिए as an advocate, या they must have been a sessions judge. अगर वो sessions judge नहीं रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 years का एज एन एडवोकेट. अगर वो भी नहीं है तो दे आर नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और अ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. As an assistant director of prosecution, so when you are to be appointed as an assistant director of prosecution, your experience should be at least 7 years as an advocate और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. तो इन दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए. डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो स्टेट एस्टैब्लिश करता है, उसका हेड कौन होता है? is headed by the Director of Prosecution who functions under the administrative control of the state. अब 2 लेवल पे हमने एस्टैब्लिश कर लिया, तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो सबसे ऊपर है. उनके अंडर हम देखते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है उनके अंडर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, बट मेनली जो है वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, and then deputy director, and then we have assistant director of prosecution. Every public prosecutor या additional public prosecutor या special public prosecutor जो भी appoint होता है, they conduct the cases in the high court and they shall be subordinate to the director of prosecution. Every public prosecutor, additional public prosecutor or state public prosecutor, special public prosecutor who is appointed by the state to conduct prosecution at the district court, and every
all of them who perform the function of prosecutors at that level will be subordinate to the deputy director of prosecution or the assistant director of prosecution. अब हमने ये डायरेक्टोरेट बना तो दिया है, बट इनका फंक्शन क्या है? So the powers and functions of the Director of Prosecution is to monitor the offences which are punishable with 10 years or more, or with imprisonment, with life or death, and to expedite the proceedings and to give opinion on filing of appeals. तो अगर कोई offence है which is punishable with death, let's say rape or murder, in that case the Director of Prosecution takes care of that case. He monitors कि वो case कौन, who is representing the state, who is taking care of the process, who is responsible for what is being done before the court, what is the evidence that is being produced, how many witnesses are being produced, and all of that, right? So that is the job of the director of prosecution. Deputy director जो है, they examine and scrutinize the police report and they monitor any cases which are punishable फॉर 7 years और मोर बट लेस देन 10 years. तो 10 years के ऊपर जो है वो तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के पास चला जाता है. तो 7 to 10 वाला जो फेज है वो डेप्यूटी डायरेक्टर के पास रहता है. एंड एनीथिंग लेस देन 10 years stays with the assistant director of prosecution. Notwithstanding what has been mentioned so far, so 7, 8, 9 में जो ये powers बताए गए हैं कि director of prosecution will monitor and deal with cases punishable with more than 10 years, deputy directors between 7 to 10, assistant director under 7 years. So irrespective of whatever has been mentioned, the director, deputy director, or the assistant um, director of prosecution shall have the power to deal with and be responsible for all proceedings under the Sanhita. तो एक general power भी दी गई है along with the specific power. The other powers and functions शैल बी एज द स्टेट में नोटिफाई. तो यहाँ पे हमको कुछ पावर्स और फंक्शंस बता दी गई है कि वो मॉनिटर करेंगे, एग्जामिन करेंगे, स्क्रूटिनाइज करेंगे, देखेंगे कि अपील फाइल करना है कि नहीं करना है. They'll do that, right? But apart from that, once the state establishes the prosecution, the state can also go ahead and assign other functions to them, and they shall be bound to perform that function. These provisions that we have discussed so far will not apply to the Advocate General of the state while performing the functions of the prosecutor. Advocate General of the state is dealt as per the provisions of the Indian Constitution and not the provisions of BNSS. So that's all for public prosecutors. Thank you everyone. I'll see you in the next class.